Hello students, I'm Abdul Shamim, Assistant Professor of English at Renua College based in Nagpur. Today, we are going to discuss about the second part of the lesson, The Thief, written by Ruskin Bond, prescribed in the syllabus of BA Part 1 in first semester of RTM Nagpur University, Nagpur. Before we proceed to second part, we are going to see the gist of the story. Let's recapitulate what we saw in the previous class in part 1. The Thief is a story written by Ruskin Bond. In this story, the narrator, who has taken a fictitious name Deepak, makes a plan to rob Arun. He pleads Arun to keep him as his servant. So Arun puts one condition, whether he could cook. He lied that he could cook. But on the very first night, when he gave him the opportunity to prepare dinner, he made the dinner so insipid that Arun put it to the neighbor's cat and asked him to get lost. But the narrator hung around and pleaded. Arun's heart got mellow and he kept him and made the promise that he was not going to teach him to cook. He was not going to teach him to cook, but also to read and write. After that, it was the routine of the narrator to wake up early in the morning, prepared a cup of tea for Arun, and went out to market in order to bring errands for Arun. He made some bargaining with the gross keepers, and whatever money he saved from negotiation, he kept it without telling to Arun. He justified himself that Arun knew, but did not say anything because he was aware that he did not pay him his regular wages. One day, Arun brought a bundle of notes and kept under his mattress and went to sleep. At once, the narrator decided that he was going to steal that money and went with the Amritsar Express to Amritsar, and he was successful in stealing the money and went to the station, and the train was standing before him and was moving and shunting slowly, but still he did not board the train. There was something which pulled him back. After that, he decided that he was going to restore the money which he had stolen from Arun, because he thought that he wanted to become a successful and honest person, and that only education could teach him, and that Arun taught him his taught him to write his name, and he made the promise that he was going to teach him to write whole sentences that was going to make him a successful person. That brought him to Arun. After that incident, the next morning, Arun woke up and the next morning, when the narrator woke up, he found that Arun had already woken up, prepared the tea, and offered him a note of 5 rupee. He knew, the narrator knew, that Arun was quite aware about the incident of the previous night, but still he did not say him a single word in order to avoid him from his guilt. That is the story all about. अब जो लेसन आज हम पढ़ने वाले उस लेसन का नाम है द थीफ। इसका पहला पार्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं, आज हम उसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इस स्टोरी में नरेटर बताता है कि वो प्लान बनाता है अरुण को लूटने के लिए, इसीलिए वो अरुण से कहता है कि मुझे तुम काम पर रख लो। वो अरुण से झूठ भी कहता है कि मुझे खाना बनाना आता है, क्योंकि अरुण उसकी कंडीशन रखता है अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो तुम्हें अपने घर में बना दे सकता हूँ रहने की, और तुम्हें मैं 2 वक्त की रोटी दे सकता हूँ। लेकिन वो अरुण से झूठ कहता है, उसे खाना बनाना नहीं आता है, क्योंकि पहले ही दिन जब अरुण उसको खाना बनाने को कहता है वो इतना
बदतरीन किस्म का खाना बनाता है कि अरुण को वो खाना उसके पड़ोस की बिल्ली को डालना पड़ता है। और वो अरुण अरुण उसी वक्त नरेटर से कहता है कि तुम इस घर से दफा हो जाओ, लेकिन वो वहीं मंडराते रहता है। अरुण से बड़ी प्रार्थना करता है कि मुझे तुम रख लो। अरुण का दिल पिघल जाता है, अरुण उसको रख लेता है। अरुण से वादा करता है कि मैं तुम्हें सिर्फ खाना पकाना ही नहीं बल्कि पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा। उसके बाद रोजाना नरेटर का ये रूटीन होता है कि सवेरे उठता है, चाय बनाता है, चाय बनाने के बाद वो मार्केट जाता है सामान लाने के लिए, और सामान में से हर दिन किराने में से कुछ ना कुछ पैसे बचाता है वो दुकानदार से भावताव करने के बाद, और वो पैसे खुद रख लेता है। और वो कहता है कि अरुण को इसके बारे में मालूम भी है, लेकिन अरुण उससे कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो जानता है कि वो उसे रेगुलर वेजेस पे नहीं करता, इसीलिए वो पैसे वो उसे रखने देता है। एक दिन अरुण पैसों की गट्टी लेके आता है, उसी वक्त से नरेटर सोच लेता है कि मैं उसकी ये पैसे चुराऊंगा, और चुराने के बाद मैं अमृतसर की ट्रेन पकड़ के अमृतसर निकल जाऊंगा। और वो चुराने में कामयाब भी हो जाता है। और जब स्टेशन पे पहुंचता है, स्टेशन पे ट्रेन उसके सामने से गुजरती होती है, उसके बावजूद भी वो ट्रेन पे सवार नहीं होता है। कोई चीज होती है जो उससे खींचते रहती है। वो कहता है कि ये जो बात थी मुझे बड़ा इंसान बनना, पढ़ लिख के, जो अरुण ने मुझसे वादा किया था मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा, पढ़ लिख के मैं बड़ा इंसान बनूंगा और ईमानदारी से पैसे कमा सकता था, ये चीज ने मुझे वापस अरुण की तरफ लेके आया। फिर वो वापस अरुण के घर आता है, जहां से पैसे चुराता है वहां पैसे छुपा के बराबर जहां से उसने पैसा चुराया था वहां पैसे को वहीं पर वापस रख देता है। अगले दिन सवेरे जब उठता है तो देखता है कि अरुण पहले से उठ चुका है, और अरुण उसे 5 रुपए का नोट देता है। जब वो पैसे लेता है तो पैसे नोट गीला होता है। वो समझ जाता है कि अरुण को सब कुछ मालूम है, फिर भी अरुण कुछ नहीं कह रहा है क्योंकि अरुण उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं कराना चाहता है, वो उसे गिल्टी फील नहीं कराना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, मतलब उसे सबक मिल गया। ये पूरी स्टोरी है। अब हम शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। Now we are going to start the second part from Arun's side. Arun sighed in his sleep and turned on his side towards me. My free hand was resting on the bed and his hair touched my fingers. I was frightened when his hair touched my fingers and crawled quickly and quietly out of the room. When the narrator reached where Arun was sleeping, he was fast asleep. He put his hand under his mattress. So he moved towards him and he went so close. Arun went so close to the narrator that he felt his hair touch his fingers. He got scared. He controlled himself and crawled back and went out of the room. अब जैसे कि हमने देखा था कि अरुण गहरी नींद में सोया था, नरेटर उसके करीब पहुंचता है और करीब से पहुंचने के बाद वो अपना हाथ गद्दे के नीचे डालता है तो अरुण करवट लेता है, इसके तरफ सिर करता है, इतना करीब आ जाता है कि जो उसका दूसरा हाथ होता है उस पर यहाँ तक कि उसके बाल भी छूते हैं। तो उसके बाल, जो अरुण के बाल होते हैं, वो उसके दूसरे हाथ को छूते हैं, इतने करीब आ जाता है। ये घबरा जाता है नरेटर। घबराने के बाद अपने आप को किसी तरीके से अपना संयम बनाए रखता है और चुपके से धीरे से उठता है और कमरे से बाहर निकल जाता है नोट की गड्डी लिए। When I was in the street, I began to run. I ran down the bazaar road to the station.
The shops were closed, but a few lights were on in the upper windows. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I felt I had to stop and count the notes, though I knew it might make me late for the train. It was already 10:20 by the clock tower. I slowed down to a walk and my fingers flicked through the notes. There were about 100 rupees in fives. A good haul. I could live like a prince for a month or two. As soon as he came out of the house of Arun, he ran towards the Bazaar road to the station because he had already made up his mind that as soon as he was going to steal money, he went to the station in order to catch the train to go to Amritsar. And the train was at 10:30. When he came to the Bazaar road, he saw the clock tower. It was 10:20. He knew that he should rush, otherwise he was going to miss the train because it was already 10:20. He got only 10 minutes. So he slowed down his pace in order to count the bundle. He counted, he came to know that it was 100 rupees in the denomination of 5 rupees note. He thought that he got a lot of money and he could spend his life quite extravagantly for a month or two. उसके बाद जैसे ही वो अरुण के घर से बाहर आता है, तुरंत स्टेशन की तरफ भागता है, बाजार रोड से होते हुए वो देखता है सारी दुकानों के लाइट बंद हो चुके हैं और क्लॉक टावर पे देखता है तो उस वक्त 10:20 हो चुके होते हैं। उसे मालूम था कि 10:30 बजे की ट्रेन है, स्टेशन पे पकड़ना है जो, जिससे वो अमृतसर भाग जाएगा। इसीलिए वो भागता है, लेकिन उसके दिल में ये बात होती है कि आखिरकार जो मैंने पैसे चुराया वो कितने पैसे है। इसलिए पैसे काउंट करने के लिए वो अपनी रफ्तार को थोड़ी कम करता है और गिनता है नोट को। नोट देखता है तो उसके वो समझ जाता है कि ये 100 रुपए की गट्टी है, 5-5 के इसमें नोट है। वो कहता है काफी बड़ी रकम मैंने चुराई है और कम से कम इस रकम से मैं महीने 2 महीने तो आराम से ऐशो आराम वाली जिंदगी बिता सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight onto the platform. The Amritsar Express was just moving out. It was moving slowly enough for me to be able to jump on the footboard of one of the carriages, but I hesitated for some urgent, unexplainable reason. As soon as he reached the station, he saw that there was Amritsar Express and it was shunting and moving slowly. He had the opportunity to board the train, but still he did not. There was some unexplainable reason that pulled him back. That is why he did not board the train, though he could board it quite easily. Because of that unexplainable reason. जैसे वो स्टेशन पहुंचता है, स्टेशन पे हमेशा उसकी आदत थी कभी भी वो टिकट नहीं खरीदता था। तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है, प्लेटफॉर्म पे देखता है कि अमृतसर एक्सप्रेस उसके सामने से धीरे धीरे गुजर रही है। वो इतने धीरे धीरे से गुजर रही थी कि आसानी से वो स्टेशन आसानी से वो कोई भी कैरेज में बैठ सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे अनएक्सप्लेनेबल रीजन होते हैं जो उसे खींचते हैं, उसे सवार होने के लिए उसे ट्रेन में सवार होने से रोकते हैं। वो कुछ ऐसे अनएक्सप्लेनेबल रीजन होते हैं। I hesitated long enough for the train to leave without me. When it had gone and the noise and busy confusion of the platform had subsided, I found myself standing alone on the deserted platform. The knowledge that I had 100 stolen rupees in my pajamas only increased my feeling of isolation and loneliness. I had no idea where to spend the night. He got a feeling of hesitation and inhibition. But when the train left the platform,
There was calm and peacefulness on the platform. He found himself in loneliness. He was forlorn on the platform, and he got the feeling that he had got 100 rupees note in the string of his pajamas. That also created a feeling of loneliness and anxiety in his mind. He did not know where to spend the whole night. उसके स्टेशन से ट्रेन निकल जाती है, स्टेशन खामोश हो जाता है। इसे एहसास होता है इस बात का कि इसके पैजामे में अभी जो उसने 100 रुपए चुराए हैं ये इसी के पास है, और उसे अपने आप को वो काफी अकेलापन महसूस करता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि अब मैं रात कहाँ बिताऊं। रात रात बिताने के बारे में इसको समझ में नहीं आता कि मैं रात कहाँ बिताऊं। I had never kept any friend. I had never kept any friends because sometimes friends can be one's undoing. I did not want to make myself conspicuous by staying at a hotel. The only person I knew really well in town was the person I had robbed. The narrator found it very difficult to understand where to spend the night, though he had 100 rupees notes in his pocket. He found it difficult to decide where to spend the night because he did not have any friends or any acquaintance in that town. And he did not like to stay in any hotel because staying in a hotel was quite risky for him because that could reveal his identity and he could be caught. There was only one person whom he was quite familiar and was a friend to him, and that was the very person whom he had robbed. नरेटर को समझ में नहीं आता है कि रात में कहाँ बिताऊं, जबकि उसके पास 100 की गट्टी होती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि रात कहाँ बिताऊं, क्योंकि उस शहर में कोई भी उसका जान पहचान का नहीं था। और वो होटल में रात बिताना पसंद नहीं करता था, क्योंकि होटल में अगर रात बिताएगा तो उसे सारा अपना एड्रेस बताना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा, जिससे पुलिस उसको आराम से पकड़ सकती थी। इसीलिए वो होटल पे रुकना पसंद नहीं करता था, और कोई भी उस शहर में उसका जान और पहचान वाला व्यक्ति नहीं था। और जो व्यक्ति था जो उसका जो उससे जानता था, पहचानता था, उसे अपना दोस्त समझता था, उसी इंसान को इसने लूटा था। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar, keeping to dark, deserted alleys. I kept thinking of Arun. He would still be asleep, blissfully unaware of his loss. So he went out of the station and started walking towards the bazaar from the deserted and dark lanes. Still, the thought of Arun haunted him. He kept on thinking about Arun. He must be He must have fallen asleep, unaware of the loss that his money had been stolen. वो स्टेशन से बाहर निकलता है और धीरे धीरे बाजार के रास्ते होते हुए अंधेरी और खामोश गली से गुजरता है। अभी भी अरुण का ख्याल उसके धीरे दिमाग को सताते रहता है। वो अरुण के बारे में सोचता है कि अरुण मस्त मजे की गहरी नींद में सोया होगा, उसे मालूम भी नहीं होगा कि उसके 100 रुपए मैंने चुरा लिया हूं। I have made a study of men's faces when they have lost something of material value. The greedy man shows panic. The rich man shows anger. The poor man shows fear. But I knew that neither panic nor anger nor fear would show on Arun's face when he discovered the theft. Only a terrible sadness, not for the loss of the money, but for my having betrayed his trust. The narrator was quite aware about the facial expressions of the people whom he had robbed on different occasions. If the person was greedy, so after his money was stolen, was going to show panic, a kind of unreasonable fear. The rich man was going to show anger when his money was stolen. The poor man was going to
to show his fear. But he knew that Arun was neither going to show panic nor anger nor fear. He was when he came to know that he was robbed, he was going to show only sorrow and sadness. Sadness that his his honesty, that his honesty was that his honesty was betrayed. His trust was betrayed. He was only going to lament that he kept trust and faith on the narrator, and the narrator betrayed his trust and faith. नरेटर कहता है कि मैंने अलग अलग लोगों को लूटा था और लूटने के बाद उनके चेहरे के हावभाव से मैं भले भांति वाकिफ था। जब कोई लालची इंसान को लूटा जाता तो वो घबरा जाता, जब अमीर इंसान को लूटा जाता तो गुस्सा हो जाता, जब गरीब इंसान को लूटा जाता तो वो डर जाता। लेकिन अरुण का मामला बिल्कुल अलग था। अरुण ना तो पैनिक होगा, ना गुस्सा आएगा, ना उसे डर सताएगा। अरुण को जब पता चलेगा कि उसके पैसे से लूटा जा चुका है, उसके पैसे चुरा लिए गए, तो सिर्फ उसे इस बात का दुख होगा। दुख उसे पैसों का नहीं होगा, दुख उसे इस बात का होगा कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है। इस इंसान पे उसने भरोसा किया, उसका भरोसे को तोड़ दिया गया है। उसे इस बात का दुख होगा, जिस पे उसने इतना भरोसा किया, उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। I found myself on the Maidan and sat down on a bench with my feet tucked up under my haunches. The night was a little cold and I regretted not having brought Arun's blanket along. A little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind brought the rain whipping across my face. Then he reached to the Maidan, where he found an empty bench, where he sat down. And the night was quite cold. Cold wind was blowing. At the same point of time, it started raining and it was drizzling. He got totally wet, so his shirt and pajamas stuck to his body. And the drop of rain appeared just that the drops of rain were wiping across his face, were wiping on his face, it appeared. उसके बाद वो एक खाली मैदान उसे दिखता है, जहां पर एक बेंच होता है, वहां पे जाके वो बैठ जाता है। रात बड़ी ठंडी थी, ठंडी हवा चल रही थी। उसे अफसोस होता है कि उसने ब्लैंकेट भी अरुण के घर से चुरा के नहीं लाया। धीरे धीरे बारिश होना शुरू होती है। बारिश के कारण ठंड और बढ़ जाती है। वो पूरे तरीके से पानी में भीग जाता है। उसके कपड़े उसके बदन को चिपक जाते हैं और पानी की बूंदें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे थपाड़े लगा रही है उसके चेहरे पर। I told myself that sleeping on a bench was something I should have been used to by now. But the veranda had softened me. He wanted to sleep on the bench, but he could not because he had changed his habit sleeping on the veranda. That is why he could not sleep on the bench. वो सोचता है कि मैं बेंच पे सो गया होता, लेकिन बेंच पे सोने की आदत जो थी उसकी अब छूट चुकी थी, क्योंकि वो अरुण के घर में वरांडे में सोता था, चादर पे सोता था, तो उसे थोड़ी नरम चीज पे सोने की आदत पड़ चुकी थी। I walked back to the bazaar and sat down on the steps of a closed shop. A few vagrants lay beside me, rolled up tight in thin blankets. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were still with me, but had lost the crispness and were damp with rainwater. He got up from the bench where he was sitting in the open yard.
he went back to Bazaar. He sat down on the steps of the shops which were closed because it was late night. He found some of the vagabonds. They also came very close to him and they rolled themselves in a thin blanket and went to sleep. He felt the notes which were still stuck in the string of his pajamas, though they were damp. They got quite wet. अब वो उस जगह से उठता है और बाजार में जाता है. बाजार में जो दुकानें बंद हो चुकी थी उसकी पायरी पे वो बैठ जाता है. कुछ वहाँ के जो लोग वैग्रेंट्स वेगाबॉन्ड जो खाना बदोश लोग थे वो भी उसके आसपास आके बैठ जाते हैं और सीढ़ी पे ही ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते हैं. उसके बाद वो फिर से नोट की गट्टी को महसूस करता है जो उसने अपने पैजामे की स्ट्रिंग में छुपा के रखी थी. वो पानी के कारण पूरी गीली हो चुकी थी पैसों की गट्टी. Arun's money. In the morning, he would probably have given me a rupee to go to the pictures, but now I had it all. No more cooking his meals, running to the bazaar, or learning to write whole sentences. When he thought about the bundle of notes which he had kept in the string of his pajamas, immediately he thought about Arun. If Arun had not been robbed, so he was certainly going to offer him some money the next day in the morning, ask him to go to watch movie. Then he thought that he would not have to prepare his meal. Moreover, he would not have to go to bazaar to bring errands. And the most important thing was going to be missed. That was going to learn to read and write about whole sentences. जब वो पैसे को हाथ लगाता है तो अरुण की इसको याद आती है. वो सोचता है कि अरुण अगर सवेरे उठता और मैं उसके पैसे नहीं चुराता तो यकीनन मुझे वो सवेरे उठ के पैसे लेता और कहता जाओ जाके कोई पिक्चर देख लेना. वो सोचता है अब मुझे अरुण के लिए खाना बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना बाजार जाना पड़ेगा सामान लाने के लिए. और सबसे बड़ी बात जो थी जो उसको पढ़ना लिखना सिखाना चाहता था वो पढ़ने लिखने का उसको मौका नहीं मिलेगा. जो अरुण ने से वादा किया था उसे वो पढ़ना लिखना सिखाएगा. There was something I had forgotten in the excitement of 100 rupees. Whole sentences I knew could one day bring me more than 100 rupees. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a wise and successful man, that was something I should go back to Arun. I told myself, if only to learn how to write. In the excitement of 100 rupees note, he had totally forgotten that there was something more which he was going to deprive himself only for the sake of money which he had stolen. And it was 100 rupees. The thing which he was going to miss was learning to read and write. And only while getting education, he was going to become a successful man, a wise man, a rich man. That he was going to become only after getting education, and that was going to provide him by Arun. वो सोचता है कि मैंने पैसों के चक्कर में मैं बहुत ही अहम चीज भूल चुका हूं जो अरुण ने मुझसे वादा किया था कि अरुण मुझे लिखना पढ़ना सिखाएगा. और अब तो मैंने अपने पढ़ने लिखने के दरवाजे सारे बंद कर दिया हूं कि मैंने उसके पैसे चुरा लिया हूं और मैं भाग जाऊंगा. अब मुझे पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलेगा. जो मैंने सोचा था कि मैं पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनूंगा, पढ़ लिख के मैं जिंदगी में कामयाब बनूंगा और ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा और बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, मैंने ये मौका खो दिया हूं अरुण के पैसे चुरा के. वो सोचता है कि मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगा, प्रायश्चित करूंगा और मैं वापस जाऊंगा क्योंकि मुझे लिखना और पढ़ना सीखना है. और एक बार मुझे लिखना पढ़ना आ गया तो मुझे बड़ा इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता है. वो सोचता है मैं वापस जाऊंगा. Perhaps it was also concern for Arun that drew me back. A sense of sympathy is one of my weaknesses, and through hesitation over a theft, I had often been caught. A successful thief must be pitiless. I was fond of Arun. My affection for him, my sense of sympathy
but most of all, my desire to write whole sentences drew me back to the room. He was quite concerned about Arun, and that drew him back because the thought that he was going to learn to write whole sentences that drew him back. And he also thought that he was quite sympathetic to Arun. And a thief should not be sympathetic. He should be pitiless. He should not show any kind of sympathy and mercy towards the person. If he was going to show, so he was going to be caught. And he was caught so many times because of his sympathy and mercy. उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई का ख्याल होता है वो उसे मजबूर करता है अरुण के घर वापस लौटने पर। वो कहता है कि किसी के लिए, किसी चोर के दिल में किसी के लिए दया होना ये उसके लिए काफी खतरनाक होता है, क्योंकि चोर तो दयाहीन होना चाहिए, पिटीलेस होना चाहिए। इसीलिए कहता है कई बार मैं पकड़ा भी गया क्योंकि मेरे दिल में लोगों के लिए दया की भावना होती थी। वही चीज कहता है मुझे वापस लाई अरुण की तरफ कि मैं अरुण के लिए मेरे दिल में दया भी थी और मुझे पढ़ना लिखना भी सीखना था, इसलिए मैं वापस आया। I hurried back to the room extremely nervous, for it is easier to steal something than to return it undetected. If I was caught besides the bed now, with the money in my hand or with my hand under the mattress, there could be only one explanation, that I was actually stealing. If Arun woke up, I would be lost. He immediately returned back to Arun's house. He thought that it was quite easier to steal, but quite difficult to return the money undetected from where it had been taken. He thought if he was going to be caught beside the bed of Arun, having money in his hand, he was certainly going to be thought that he had stolen Arun's money. वो तुरंत अरुण के कमरे में वापस आता है और सोचता है कि पैसे चुराना बहुत आसान है, लेकिन इसे वापस जिस जगह चुराया गया वहां रखना काफी मुश्किल है। और अगर अरुण के बिस्तर के बाजू अगर मैं पैसे हाथ में रखे पकड़ा गया तो यकीनन अरुण यही सोचेगा कि मैंने उसके पैसे चुराया है। I opened the door clumsily and stood in the doorway in clouded moonlight. Gradually, my eyes became accustomed to the darkness of the room. Arun was still asleep. I went on all four again and crept noiselessly to the head of the bed. My hand came up with the notes. I felt his breath on my fingers. I was fascinated by his tranquil features and easy breathing and remained motionless for a minute. Then my hand explored the mattress, found the edge, slipped under it with the notes. When he reached the room of Arun, he opened the door noiselessly. Very stealthily he went inside, and he reached where Arun was sleeping. He crept and put his hand under the mattress and kept the money there where from where he had stolen it. He found that the facial expression of Arun was quite calm and composed, and he came so close that he felt the breath. He felt the breath of Arun on his face. उसके बाद वो अरुण के कमरे में पहुंचता है और जहां से उसने पैसे चुराए थे बराबर गद्दे के नीचे उसके पैसे रख देता है। वो अरुण के इतने करीब आ जाता है कि अरुण की सांस जो होती है, उसकी ब्रीदिंग जो होती है, वो अपने चेहरे पे महसूस करता है। इतना करीब आ जाता है कि वो उसकी जो ब्रेथ होती है वो उसके हाथों को लगती है और अरुण इतनी गहरी नींद में सोए रहता है कि उसकी खामोशी, उसकी सुकून भरी नींद उसे बहुत अच्छी लगती है। अब जहां से उसने पैसे चुराया था वहां उसे रख के वो वहां पर रख देता है। I awoke
late next morning to find that Arun had already made the tea. I found it difficult to face him in the harsh light of day. His hand was stretched out towards me. There was a 5 rupee note between his fingers. My heart sank. I made some money yesterday, he said. Now you will get paid regularly. The next morning, he woke up quite late. When he woke up, he found that Arun had already woken up and had prepared a tea and offered him a note of 5 rupee. His heart started beating loudly. He thought whether he was caught, whether Arun knew about his about his stealing the money, but he offered him a note of 5 rupee and added that he would be paid regularly henceforth. उसके बाद अगले दिन जब वो उठता है तो वो काफ़ी लेट उठता है। अरुण उससे पहले उठ के चाय बना के पी लेता है। उसके बाद 5 रुपए का नोट वो नरेटर की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि ये लो और पैसे रखो। थोड़ी देर के लिए नरेटर डर जाता है। उसे लगता है कि अरुण को पता तो नहीं चल गया उसकी चोरी के बारे में, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। वो कहता है कि पैसे रखो और अब से तुम्हें रेगुलर तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिलेगी। My spirit rose as rapidly as it had fallen. I congratulated myself on having written the money. But when I took the note, I realized that he knew everything. The note was still wet from last night's rain. Today I will teach you to write a little more than your name, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes said anything about their knowing. I smiled at Arun in most appealing way, and the smile came itself without my knowing it. He congratulated himself that he had restored the money which he had stolen. But when he took the note of 5 rupee from Arun, it was still damp. He knew that Arun was quite aware about the money which he had stolen the previous night. But Arun did not say a single word to him. It was clearly written on his eyes and lips, but he did not utter them. And he further added that he was going to teach him to write whole sentences. He had already taught him to write his name, and that day he was going to teach him to write little more. He smiled in the most appealing way at Arun. उसके बाद नरेटर कहता है, मैंने अपने आप को बधाई दिया कि मैंने अच्छा किया, अरुण को पैसे बराबर जहाँ से चुराए थे वो पैसे, चुराए हुए पैसे वापस रख दिया। जब वो नोट को लेता है तो नोट दिखता है गीला है, तो समझ जाता है कि अरुण को कल की चोरी के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन ना वो कह रहा है ना वो बताना चाहता है, लेकिन उसे सब कुछ मालूम है। इसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन अरुण अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहता है उस चोरी के बारे में। वो कहता है कि मैं तुम्हें अब और ज़्यादा पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, तुम्हारे नाम लिखने के अलावा मैं आज तुम्हें और कुछ भी और आगे का पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। इस बात पर नरेटर के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ती है। वो समझ जाता है कि अरुण को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहता है, क्योंकि अरुण उसे शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। यही सबसे बड़ी उसकी सीख थी। नाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस। Up till now, whatever we have seen, now we are going to discuss about some MCQ questions based on the text, whatever we have learned. Choose the right answer from the option given below.
for each of the following. What reason does the narrator have for initially wanting to work for Arun? The options are: he believes Arun is a wealthy man who is careless with his money. He sees Arun as a person whom he can easily deceive and take advantage of. He wants to learn how to write from Arun. He is struck by Arun's friendly demeanor. What is the correct option? क्या कारण था जिससे कि नरेटर ने डिसाइड कर लिया कि वो अरुण के लिए काम करेगा? 4 रीजन में से क्या रीजन था? इसका सही आंसर है कि he sees Arun as a person whom he can easily deceive and take advantage of. उसे लगा कि वो अरुण को आसानी से धोखा दे सकता है और उसका सीधे साधेपन का फायदा उठा सकता है. पहले का आंसर है बी. Arun teaches the narrator several useful skills. Which skill does the narrator come to value most? Cooking, wrestling, speaking English, writing. कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? अरुण ने नरेटर को काफी कुछ चीज सिखाई थी. सबसे अहम चीज जिसकी बहुत कदर करता था नरेटर, वो क्या थी? राइटिंग, लिखना पढ़ना सिखाना. Why does the narrator struggle with Arun's trusting nature? Because it fills the narrator with guilt and makes it difficult for him to consider stealing from Arun, because Arun is too generous with his money. Because despite trusting the narrator, Arun still takes many precautions to prevent people from stealing from him, because the narrator himself has learned never to trust other people. Why does the narrator struggle with Arun's trusting nature? Because it fills the narrator with guilt and makes it difficult for him to consider stealing from Arun. Why does the narrator struggle with Arun's trusting nature? नरेटर क्यों स्ट्रगल करने लगा? अरुण का इतना ट्रस्टिंग नेचर था. क्यों? क्योंकि ऐसा लगने लगा. बिकॉज इट फिल्स द नरेटर विद गिल्ट एंड मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंसिडर स्टीलिंग फ्रॉम अरुण. क्योंकि उसे गिल्ट महसूस होने लगा कि जिस इंसान ने मेरा इतना विश्वास किया है, मैं उसके साथ विश्वासघात क्यों? उसे ये बात बुरी लगने लगी कि जिस इंसान ने मेरे साथ इतना विश्वास किया, मैं उसके साथ कैसे विश्वासघात कर सकता हूँ. इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ए. बिकॉज इट फिल्स द नरेटर विद गिल्ट एंड मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंसिडर स्टीलिंग फ्रॉम अरुण. What is the urgent, unexplainable reason why the narrator does not catch the Amritsar Express? क्यों नहीं? जबकि नरेटर के पास मौका था, वो अमृतसर एक्सप्रेस आराम से पकड़ सकता था, उसके सामने से गुजर रही थी, वो क्यों नहीं पकड़ा उसने? इसके रीजन है, 4 ऑप्शन दिए हैं. He has come to see Arun as a person who cares for a mentor and a friend. The money he is carrying with him gets wet, and so he is unable to pay for the ticket. The thought that he would never have to work for Arun makes him feel regret. He needed to count how much money he had stolen. क्यों नहीं? इतना मौका मिलने के बाद भी वो ट्रेन पकड़ के क्यों नहीं भागा? क्योंकि he has come to see Arun as a person who cares for
he considers him as his mentor and a friend. First option, क्योंकि क्योंकि वो अरुण को अपना दोस्त और मेंटर मानता था, क्योंकि अरुण उस पर काफी विश्वास करता था, अरुण ने उसको पढ़ना लिखना सिखाया था। ये अनएक्सप्लेनेबल रीजन है जिसके कारण ट्रेन उसके सामने से गुजर रही थी लेकिन वो ट्रेन में सवार नहीं हुआ। What makes the narrator realize that Arun knew everything about what happened the night before? किस चीज ने मजबूर किया नरेटर को सोचने पे कि अरुण को रात की घटना के बारे में सब कुछ मालूम है। Arun had kept the doors unlocked. The 5 rupee note which Arun paid him was still wet from the previous night's rains. The money was not in the same place where Arun had left it under the mattress when he woke up. A vagrant on the street had revealed everything to Arun in hope of earning a reward. The correct option is B. The 5 rupee note which Arun paid him was still wet from the previous night's rains. क्योंकि जो नोट उसने नरेटर को दिया वो नोट पानी से पिछली रात की बरसात से उस वक्त तक गीला था, उस बात से समझ गया कि अरुण को सब कुछ मालूम है। Which of the following makes according to the narrator a successful thief? नरेटर के मुताबिक कोई चोर सही मायने में चोर कब बन सकता है? क्विक विटेडनेस, इंडिपेंडेंस होने के कारण, पिटीलेसनेस होने के कारण या अडेप्टिबिलिटी होने के कारण। सही मायने में कोई भी चोर कब चोर बन सकता है? जब वो क्या होगा, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होंगी? पिटीलेसनेस। जब वो क्या होगा? मर्सीलेस होगा, दयाहीन, पिटीलेसनेस। द करेक्ट ऑप्शन इज पिटीलेसनेस। सी इज द करेक्ट आंसर, पिटीलेसनेस। What happens when Arun turns on his side when the narrator is trying to steal from him? क्या हुआ जब अरुण पलटता है और वो इतने करीब आ जाता है नरेटर के, जब नरेटर उसके गद्दे के नीचे से पैसे निकालने की कोशिश करता है। Arun sighs and his hair touches the fingers of the narrator. Arun forgives the narrator for trying to steal his money. None of the above. क्या होता है? Arun sighs and his hair touches the fingers of the narrator. क्या होता है? वो इतने करीब आ जाता है कि वो जो उसकी सांस होती है उसकी सांसों को महसूस करता है नरेटर, और यहाँ तक कि अरुण के जो बाल होते हैं वो नरेटर की उंगलियों को टच होते हैं। So the B is the correct answer. I hope you have understood the topic, but still if you have any difficulty in doubt, so you can contact me on my email ID, that is abdulshamim3@gmail.com. Thank you.